welcome, dear students, to the celebration of Children's Day. I know you all are very excited today for the celebration, and I welcome respected management, respected sir. Hmm. Yes, as we know, every child is a different kind of flower, and all together they make a beautiful garden. Yes. Now I am dedicating one song to you. I know you all have heard that song. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance for to grow up once again. लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा दौड़ा 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 तुम उठा के दौड़ा. Yes, आप लोगों को भी अपना बचपन याद आ गया होगा, right? Yes, because one of the greatest thing which we are having that is a happy childhood. A very cheerful afternoon to all of you present here. Children are the image of God. So let's celebrate the spirit of childhood on this very special day. My dear children, I know you all are very excited to celebrate this Children's Day with us. Yes, we will be having lots of fun today. Okay, I know you all want to enjoy a lot. Yes, because last to last year we have celebrated this Children's Day with you in school. Okay, I know you all have enjoyed. We were having a fun fair, right? And this year also, if yeah, you all are coming to school, right? Next week. So we will be having fun here also. So be ready. Okay, now we will be having lots of fun, but before that, you should know why we celebrate this day on 14th November, right? Okay, I know so many students know the importance of the day. Yes, I know you all are very excited and you all are waiting for the celebration. So we will be starting in just 2 minutes. Okay, students. Yes, everyone. Okay, so your waiting time has over. We will be starting the program. And first of all, I will invite Selena ma'am to tell you the importance of the day, that why we celebrate this day on 14th November. Yes, please, Selena ma'am. हेलो चिल्ड्रन आदरणीय संचालक महोदय जी प्रधानाचार्य जी एवं सभी शिक्षकगणों एवं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी Yes, I request all the students to please mute their mics.
Please, all of you, all the students, please mute your mic. हम सब जानते हैं आज बाल दिवस है। हम यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के जन्मदिन अर्थात बाल दिवस बना रहे हैं। 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर के दिन बाल दिवस के रूप में हम इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन स्वतंत्र भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस होता है। उन्होंने बच्चों के प्रति बहुत प्यार था तथा बच्चों के प्रति प्यार और लगाव होने के कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। बच्चों को एक मजबूत राष्ट्र की नींव की ईंट माना जाता है। वे छोटे तो होते हैं किंतु राष्ट्र में सकारात्मक जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं क्योंकि देश का विकास उन्हीं के हाथों में होता है। तो जिस प्रकार सभी बच्चों को एक मजबूत राष्ट्र की नींव की ईंट माना है तो बच्चों हमें सही लगन से मेहनत से अपना एजुकेशन को ध्यानपूर्वक पूर्ण करना है जिसके द्वारा हमारा जीवन सफल होगा क्योंकि पढ़ाई हमें एक शिक्षित नागरिक बनाएगा और उसके साथ साथ हम जीवन में उन्नति के शिखर पर अग्रसर करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। बचपन है एक ऐसा खजाना, बचपन है एक ऐसा खजाना, आता है ना दोबारा। बचपन है एक ऐसा खजाना, आता है ना दोबारा। बचपन है एक ऐसा खजाना, आता है ना दोबारा। मुश्किल है उसको भूल जाना, मुश्किल है उसको भूल जाना। वो खेल, मस्ती, नाच और गाना, वो स्कूल में होमवर्क न करने का बहाना, माँ को चिढ़ाना, पिता को पटाना। बचपन है एक ऐसा खजाना, मुश्किल है इसको भूल जाना, मुश्किल है उसको भूल जाना। अंत में सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Selina ma'am, for the information you have told to students. Yes, November 14th, to honor the memory of our first Prime Minister. We celebrate this day on the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru because he loved kids as he thought that children are the future of our nation. And as Selina ma'am told, that students, if you will be educated, of course you will get success. So study hard, pay attention, respect your elders. Okay, this will of course lead to success. सोनिया मैम, आपको पता है बचपन के किस्सों में जिंदगी ढूंढते हैं। वो बेपरवाह बचपन, वो छोटी छोटी ख्वाहिशें, रोने की वजह ना थी, न हंसने का कोई बहाना। आज भी याद आता है मुझे वो बचपन का खिलखिलाना, वो हंसना, रूठना और मनाना। बचपन की ख्वाहिशों वाले खेल को कोई फिर से खिला दे मुझे, बेवजह हंसना, खेलना और रूठना, मनाना। We love you children from all our heart. We bless you children from all our heart. You are the shining stars and gift of God. You are the children blessed by the Lord. You are the buds and you are the flowers. You are the shining stars that shine in the dark. We love you children from all our heart. We bless you children from all our hearts. You are the light of darkness, and we pray for your brightness. You are the glimpse of the future, and you are the
children, we want you to fly. La 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 la. May you always be blessed by the Lord. May you always win the best of awards. La 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 la. Best of luck, children. आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। ओ आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। हो तुम्हें चांद पे ले जाएं। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। ना दिन नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी घोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जोर। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना जोर। चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी घोर। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। ओ सुन लो सुनाता हूँ तुमको कहानी, रूठो ना हमसे ओ गुड़ियों की रानी। रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలిమల్ సులుసులుమల్ మకనక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आज तक कितने सारे फ्रेंड आए हैं। हाँ, और सभी कितने स्मार्ट और क्यूट लग रहे हैं ना। हाँ। What is your name? My name is Tito. And Tito. Why are you eating me? अरे तुमने ही तो कहा Pito. No, my name is Pito. Oh. So here we are, Tito and Pito. अच्छा पीटर, तुम्हें अल्फाबेट्स याद है? हाँ, मुझे पूरे अल्फाबेट्स आते हैं। अच्छा, तो सुना ए से जेड तक अल्फाबेट। ओके। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. वाह पीटर, तुम्हें तो सारे अल्फाबेट्स याद है। अच्छा पीटर, ये बता कि ए से जेड तक में सबसे ज्यादा ठंड किसको लगती है? मैं 2 मिनट मैगी देती हूँ। 1 2 टाइम इज ओवर। टीचर रुकना, मुझे याद करने देना। टीचर मुझे नहीं याद आ रहा। अरे पी को सबसे ज्यादा ठंड लगती है। कैसे? वो है ना, क्योंकि वह ना एसी के बीच में रहता है। अच्छा टीटो, अब जो मैं पूछूंगी उसका फटाफट जवाब देना। हाँ, फटाफट। ओके। कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फटाफट। ओह टीटो, मैंने तुम्हें मेरे सवाल का जवाब फटाफट में जल्दी जल्दी देने के लिए कहा है। अच्छा, मैं अब जल्दी जल्दी दूंगी। ओके। कमल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी। ओह माय गॉड टीटो। टीटो मैं क्या सोच रही थी, मुझे क्या पता। तुम्हें पता है टीटो, मेरे एग्जाम में 88% मार्क्स आए थे। अच्छा, और मेरे तो है ना 99% मार्क्स आए थे। चल चल टीटो, ज्यादा मजाक मत कर। इसकी शुरुआत किसने की?
अच्छा टीटो चल, तेरे 99% आए ना? हाँ, मुझे तो 15 फलों के नाम बता। हाँ, ओके? हाँ, स्टार्ट। अनार, शाबाश। आम, गुड। अमरूद, वेरी गुड। अब मुझे बाकी के 12 फलों के नाम बता। 1 दर्जन केले। अच्छा पीटर, अब मैं भी एक सवाल पूछूं? पूछो। 2 में से 2 गए तो कितने बचे? मुझे नहीं समझ आया। अरे मैंने तुझे 2 रोटी दी, पर तूने दोनों रोटी खा ली। तो तेरे पास क्या बचेगा? सब्जी। सब्जी? मुझे ना भूख लगी थी तो मुझे ना याद आ रही मम्मा की, मुझे घर जाना। अरे रुक। याद है कल चिल्ड्रंस डे है। हाँ याद आया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल टीचर्स सेलिब्रेट करेंगे चिल्ड्रंस डे और मैं भी डांस करूंगी और मैं भी मस्ती करूंगी। और 17 नवंबर से हमारे स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। अरे हाँ याद आया, भूलना नहीं। मैं नहीं भूलूंगी, मैं तो डेली स्कूल जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी। ओके टीचर, तो अब हम 17 नवंबर को डायरेक्ट स्कूल में मिलेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स। Yes, it was really fun. I hope you all have enjoyed. And सबको अपने स्कूल के दिन याद आ गए होंगे जब आप लोग आपस में ऐसे ही मस्ती बहुत करते मजा हैं। आया और मुझे तो पूरे मेरे बचपन की स्कूल के दिन याद आ गए। आप सबको याद आए ना? Yes, so all have to come to school now to enjoy with your friends, but with safety measures, right? Yes, without children, the world would be devoid of sunshine, laughter, and love. Children are the most precious creation in the world. We should protect, guide, and love them with all our might, as they are the greatest treasures. And on this very special occasion, I would like to invite respected Principal Ma'am for her guidance and for her wishes for the lovely children. Ma'am, please. Hello, good afternoon, all of you. Good afternoon. I hope you can get me. You can show your thumb. Yes? Okay, fine. Very good. Yes. So I'm so happy and delighted today because we are celebrating your day. We are celebrating Children's Day. And you all know through these programs, your teachers have already informed you why we are celebrating 14th. It's not today, na? You know, it is tomorrow actually, 14th. Why this 14th? November is celebrated as Children's Day in the remembrance of our former first Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, you all know that. So as he loved the children so much, everybody loves children. All love children because children are the best creations of God. Up now, ma'am just now told, I think, I heard so God has created so many things in this world, but children are considered the best and beautiful creations of God. Why? Because you are all very, very innocent. Children are considered like God Himself because God cannot be wrong
God cannot do wrong things, and He loves everyone. He always does good things. So that likewise, the children also always must do good things. And your soul is so innocent. You love people, you love your parents, isn't it? So everybody, that's why all love children. That's how, that is why, that's the basic main reason Jawaharlal Nehru, Pandit Jawaharlal Nehru, our former Prime Minister, he also loved all the children of our country. And that is not the only reason. He believed very strongly that children, today the children, or the children those who are today, they are going to grow like a strong nation builders. They are going to build our nation so strongly. Tomorrow you will grow into a strong youth with lots of knowledge and with lots of energy, lot of wisdom and lot of values of our country, isn't it? So carrying all these things, when you grow up to a citizen, when you grow up to a young youth of the citizens, you will lead our country to its height. So that hope and faith Pandit Jawaharlal Nehru had in all the children. Okay, that is why he wanted his day, his birthday to be celebrated in the name of Children's Day. Okay, so you should not forget this. Of course, your teachers have given you lots of messages and they try to make you so happy on this day. And also, I know that they try to bring that kind of awareness that you understand the importance of your day, importance of Children's Day, importance of the birth anniversary of our former Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. Okay, so you have understood all these things and you enjoyed your day today, and your day is going to be tomorrow actually. And tomorrow also you can enjoy the day. But on behalf of this, as we celebrate this day, all must take one resolution. Everybody should take one individual resolution. Whatever things that you don't do, proper things which you don't do, if at all, if you are having any bad habit, so you must take the resolution that on Children's Day celebration, I'm going to take this oath that I will not do such a bad thing. Like I will do such a good thing. Like for example, you are not able to get up in the morning, you don't want to do things in a proper manner, then you must do no. As soon as I get up, I will arrange my bed, I will arrange all the things in a proper manner. And sometimes you don't listen to your parents. Mama is telling you, please do that. Or mama is telling, please, you drink milk, you eat this food I prepared for you. You don't like that. You say, I don't eat. No, I don't want to come. No, I don't want to study. And all the time telling no to parents or elders or teachers. If at all, if you are having that kind of bad habit, then you must take a resolution, oath, that today being Children's Day, I'm not going to do this kind of bad thing. I'll leave by this bad habit, then I'm going to do a good thing. Like that, so many things you can. And so many small things in a day it comes, then you can take a resolution and you can follow all good things. Okay, dear children, I hope you understood and you're all listening to me. Yes, and we are all going to pray for you. Very good. We are all going to pray for you very specially tomorrow and today also. You all know that as such we keep praying. But then tomorrow being your special day, today and tomorrow we'll be praying for all of you, for especially during this pandemic, to give you good health. And we are happy to see you all sitting there very happily at home with your parents. You are enjoying the Children's Day celebration. We are happy that God has given us all good health. First of all, we must praise and thank the Lord. We must thank God for giving us this such a wonderful opportunity to stay at home, stay healthy at home, and also studying. And very shortly, you're going to come to school also.
Anna? I think you might have received the circular and your parents might have told you 22nd onwards, we are going to meet you all very personally. So we are all eagerly waiting to meet you personally, dear children. Okay? Till then also, you must keep yourself very safe and always keep safe. Follow all the safety instructions, whatever is given by your teachers and by your parents. At home also, parents keep telling you, keep guiding you how you have to maintain yourself, keep up yourselves during this pandemic unexpected situation. Okay, dear children? Okay. Yes, how was it? Have you enjoyed or not? Show me thumb. Yes, show your thumbs up. Have you enjoyed or Yes, not? very nice. Okay, I know you all